हेलो चिल्ड्रन एंड हेलो पेरेंट्स ऑल्सो। तो बच्चों और बुजुर्गों, हम लोग को आज एक बहुत बढ़िया मौका मिला है कि वी आर गोइंग टू शेयर सम न्यू एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स विथ यू in focus of our very well-known JEE Advanced 2020. That is, welcome everyone from Mock Test for You. We are hereby presenting a very important class, totally online platform we are providing. You can avail on our site, even on our YouTube channel, that we are having a crash grooming program for जेई एडवांस्ड फोकस स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग 3-4 महीने से इस एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं। तो सो वी हैव टू बी दैट मच फोकस्ड, वी हैव टू बी दैट मच फोकस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डेट. It is 27th of September. This year, after a lot of tantrums under the situation of pandemic, COVID pandemic and all, हम लोग का ऑलरेडी 3-4 महीना वेस्ट हो चुका है. So there is high time now, it is the most crucial time to focus on our last minute preparation. मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा प्रिपरेशन ले चुके हो, तो हम लोग क्यों आज आए हैं आपके सामने? एक्चुअली टू शेयर सम थॉट्स, शेयर सम आइडिया, सच दैट कुछ तो सीखना को मिल सकता है, कुछ तो हम जरूर सीखेंगे आफ्टर दिस क्लास, कुछ ना कुछ तो हम सीख ही लेंगे. सो वेनेवर ऐसा भी हो सकता है कि एंड ऑफ माई लेक्चर देयर विल नॉट बी एनीथिंग इन डाउट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, अगर तुम लोग पहले सारा पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर फॉलो कर चुके हो, जब से जेई एडवांस्ड आया है, सबको पता है कुछ साल पहले, दैट इज बिफोर 2013 एंड ऑल, it was named as IIT entrance test, IIT admission test. So there were two papers, screening and mains. There was different thing, but जब 2013 onward से that is advanced आ चुका है, तो advanced के लिए हम लोग को ये पता है कि advanced means थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा. So whatever already you have prepared for state level engineering entrances, whatever you have prepared for JEE mains entrance, सो ये सब के बावजूद जो हम लोग को थोड़ा बहुत लर्न करने पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिकैप करना पड़ेगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास ऑफ जेई एडवांस्ड. एंड वी विल बी हैविंग आफ्टर दिस क्लास आफ्टर क्लास, बहुत सारा क्लास हम लोग करेंगे बीचों बीच बिफोर योर एग्जाम, कि बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. जैसे हम लोग पहले दिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लेकर प्रभु का नाम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैकेनिक्स. हम सबको पता है यूनिट्स डायमेंशन से शुरू करके ग्रेविटेशन तक ये एक लंबा सफर है. इट्स अ बिग सक्सेसफुल जर्नी फॉर इयर्स आफ्टर इयर्स. सो मैकेनिक्स को हम 2 क्लास में बांटेंगे, 2 क्लास में हम लोग मैकेनिक्स का डिस्कशन करेंगे. ठीक है बच्चों? तो चलो कुछ टाइप का मैकेनिक्स प्रॉब्लम लेट अस डिस्कस फॉर यू. स्पेशली वी आर थिंकिंग अबाउट जेई एडवांस्ड 2020. नाउ जेई एडवांस 2020 का तो ये मतलब नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम डिफिकल्ट होगा. पहले ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि हर एक प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा. जो होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, कुछ टाइम किलिंग क्वेश्चन रहेगा, तो वी हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्टर. तो बच्चों, तुम लोग एडवांस तक आ चुके हो, दैट मीन्स यू आर वेल केपेबल. तुम लोग ऑलरेडी यू हैव डन समथिंग, अ बिग एक्स्ट्रा माइल्स यू हैव मूव्ड. सो तुम्हारे बीच में वो हैसियत है, वो हिम्मत है जो तुम आज जेई एडवांस देने जा रहे हो. तो सीधा बात में आते हैं, सीधा लेट्स कम टू द पॉइंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस टुडेज टास्क एंड टुडेज प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मैकेनिक्स. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मैकेनिक्स, हम लोग का सब एक बात हर वक्त हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि whenever I am performing something on mechanics problem, I have to depend on mathematics. मैथमेटिक्स के ऊपर मुझे बहुत डिपेंड करना पड़ेगा. तो मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो फिजिक्स के लिए है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस. So whenever I am going for calculus,
सो कैलकुलस का एप्लीकेशन तो रहेगा ही, लेकिन बच्चों एक चीज हम लोग दिमाग में बैठा कर रखा है कि एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको देख के ही हम लोग को लग जाता है कि वी हैव टू अप्लाई कैलकुलस हियर। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि हम लोग को कैलकुलस छोड़ के भी ट्रिक यूज करना पड़ेगा। जैसे सोचो बच्चों, एक क्वेश्चन तुम 3 मिनट में कर सकते हो, लेकिन एंट्रेंस पर्पस में वही क्वेश्चन हमको लेस देन 1.5 मिनट में करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? देखो एक सिंपल सा प्रॉब्लम, वी विल गो सिंपल टू हार्डर, नो इश्यूज, वी विल रियली गो सिंपल टू हार्डर। So let's take a very simple problem. Though it look like very easy, but we can make it easier. Suppose a particle is moving according to this relation between velocity and time. A particle जो ये velocity time relation के बराबर move कर रहा है. So we have to find out the total distance traveled between 0 to 4 seconds by the particle. We have to find out the total distance traveled by the particle in between 0 to 4 seconds. तो बच्चों हम लोग को ये क्वेश्चन देख के ही लगता है ये अगर v और t का रिलेशन है, डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। अरे क्या इंटीग्रेट करेंगे, सीधा बात है, डिस्टेंस का बात है तो डिस्टेंस हम लोग के बीच में बहुत है। एक्चुअली अब सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है तो डिस्टेंस भी इधर निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे, इंटीग्रेशन ही हम लोग को पता है, बहुत सारा अदर प्रोसेसेस भी है। जो देखो इधर मॉड फंक्शन है तो मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस दोनों लेकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इंटीग्रेशन करने का फायदा ही नहीं है, इधर बेकार हमारा झमेला बढ़ेगा। तो वी कैन यूज अ लिटिल बिट शॉर्टर ट्रिक। यू कैन सी t जब 0 सेकेंड था तो v कितना आएगा, सो v शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, v शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब t जब 1 सेकेंड हो गया तो v शुड बी 1 मीटर पर सेकेंड, when t is 2 v should be 0, when t is 3 v should be 1, when t is 4 this v should be again 2 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा खासा चीज इधर देखो बच्चों, that is whenever we are actually concentrating on this particular maths, whatever be the time instant, either it is 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, velocity is not exceeding a limit between 0 to 2। तो 0 से 2 के अंदर ही रहेगा। टाइम तुम जितना भी मूव कर लो 0 to 4 सेकेंड के अंदर, वेलोसिटी 0 से 2 के बाहर नहीं जाएगा। तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ that is a velocity time graph, so it's 0 1 2 3 4, these are the seconds we have traveled and this is the velocity I am traveling. So this is the origin where v is 0 and t is where t is 0 and v will be 2. So if I plot the graph here at the origin, here the velocity is 2, as we have got it that at t equals to 0 velocity is 2, at 1 second velocity is 1, at 2 seconds velocity will be 2. So this graph is falling like this. Again for 3 second velocity is 1, for 4 second velocity is 2. So ultimately we know that area under vt graph, the area under velocity time graph is actually equal to the distance traveled by a moving object. So how much area we are getting here under this velocity time graph? So this velocity time graph, the total distance we will travel, this is the area under the graph, that is area of the two identical triangle. So how much is this area? We should write 2 into each of the triangles area, that is half into base into height. So finally it is 4 meter. So this will be the answer of the question, that is 4 meter distance will be traveled by the particle when it is following this particular formula of velocity or this particular relation between velocity and time. तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम लोग जब कर रहे हो, ये सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करके ये करने में तुम्हें कभी भी 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम तो लग ही नहीं सकता है। सो इंटीग्रेशन का झमेला है भी नहीं,
तो हम लोग इजीली बाय द हेल्प ऑफ सिंपल कोऑर्डिनेट अप्रोच वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि तुम लोग का जो वीडियो स्क्रीन में हम लोग को तुम देख रहे हो, तो एक स्क्रीन में एक मेल आईडी जाएगा, तो क्लास के बाद you can send me the doubts also that we can clear personally. I can send you or our team. I am not only representing Minervaa, we are Minervaa and this is Rahul from Minervaa, and whenever Minervaa is representing the entire faculty team, so for you only, designed for you only, so the whole team will be clearing your doubts for JEE advanced exam. So this is very very important thing for us, that one type of problem we have seen. Now let's go towards another type of problem, and for that particular issue I am going to have another problem which is a combination of all types of mechanical concepts you have learned in class 11. So children, after doing this problem we are switching towards our next problem. हम लोग next problem के बारे में सोचेंगे. So first write down one simple thing, that is draw this axis diagram first. A particle of mass 10 gram, a particle of mass 10 gram is moving along the positive x-axis from origin, is moving along from positive x-axis from origin with a speed of 10 centimeter per second, with a speed of 10 centimeter per second, while a force of 10 dyne, is actually working on it at an angle 45 degree with the positive x-axis, at an angle 45 degrees with the positive x-axis. Now we need to find out the work done. We need to find out the work done due to motion of this particle. We need to find out the work done due to motion of these particle. So बच्चों इसका तो काम हो गया. We can rub it, we can remove, and we can go for the new numerical. So this is a very elementary one, but why I am discussing this? Because in this problem you can reconnect whatever you have studied from vector to work power energy, whatever you have studied in Newton's laws of motion, vector resolution, and work power energy. See how we can do that. See very carefully. First of all, what I told, that you have to find out the work done after 1 second. You have to find out the work done after 1 second. Now when we are going to calculate this work done, first of all we need to know one thing, that is after 1 second what will be the velocity of the particle, because as we know from the work energy theorem, that work done equals to delta means change, so change of kinetic energy. So work done equals to change of kinetic energy. Now see, we know that initially there was a velocity along x-axis, but there was no velocity along y-axis, right? So there was no velocity, so we can take along x-axis this speed is ux, and along y-axis the speed was 0. So when I am taking the velocity at initial moment, at the beginning, at t equals to 0, so net speed was, or net velocity was, root over ux square plus uy square, as the two components I am taking at 90 degrees to each other. So इसका value कितना होगा? It will be simply 10 square plus 0, so it will be 10 centimeter per second. So this is the initial velocity, or the velocity with which we have started the calculation, we have started the observation. देखो बच्चों इसके बाद क्या हो रहा है? So after 1 second, as there is a force, एक force apply हो रहा है, तो ये force के वजह से definitely this particle will suffer an acceleration. इसके ऊपर एक acceleration create होगा, and due to this acceleration definitely
ये पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। नाउ सी वेरी केयरफुली, दिस फोर्स वी कैन रिजॉल्व इट इनटू टू एक्सिस एज fx and fy. So if the angle is theta, so this should be f cos theta and fy should be f sin theta. चलो बच्चों, तो हम लोग तो बोल ही सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx एंड fy, बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? सबको पता है कि f का वैल्यू है 10 और cos 45 is 1 by root 2, so we are getting it as 5 root 2 dyne. So we are getting as the force is 5 root 2 dyne। और ये खास बात तो है 45 डिग्री एंगल का, जो साइन और कॉस के लिए सेम वैल्यू रिटर्न करता है, तो fy का भी वैल्यू होगा 5 root 2 dyne। सो अंडर दीज टू फोर्सेज ऑफ fx एंड fy क्या होगा? डेफिनेटली फोर्स है, मास है, तो एक्सीलरेशन तो बनता ही है ना। सो एक्सीलरेशन क्या होगा? along x axis it will be fx by m, along y axis it will be fy by m। तो x एक्सिस बराबर जो फोर्स आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? 5 root 2 dyne, ऑलरेडी हम पा चुके हैं इसको, डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? चलो 10 ग्राम है, तो हम लोग का एक्सीलरेशन जो आ रहा है √2/2 और 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आ गया along x एक्सिस। सिमिलर कैलकुलेशन, सी फोर्स इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन भी सेम आएगा जैसा ax का आया था, ये भी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब जो चीज होगा, ड्यू टू दीज टू एक्सीलरेशंस along x axis and y axis, द पार्टिकल, उसका वेलोसिटी x एक्सिस के तरफ में एक तरह से बढ़ेगा और y एक्सिस के तरफ से एक तरह से बढ़ेगा, क्योंकि x एक्सिस में उसका एक इनिशियल वेलोसिटी था पहले से और y एक्सिस में उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। सो दोनों टाइप का वेलोसिटी आगे बढ़ता जाएगा। कैसे? हमको ये इक्वेशन बहुत पहले से पता है कि v इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर हम x एक्सिस के बारे में सोचेंगे तो v के जगह अगर हम vx लिखेंगे तो x एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी इज vx, कैन बी रिटन एज ux प्लस at। तो ux प्लस at क्या होगा? u के जगह हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज 10 प्लस a के जगह मिल चुका है 1/√2 एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो 10 प्लस 1/√2, दिस विल बी the final velocity along x axis। तो सिमिलरली y एक्सिस में क्या होगा ना? along y axis वेलोसिटी देखो, इनिशियली जो वेलोसिटी था वो था 0, तो along y axis जो फाइनल वेलोसिटी होगा ये होगा ay into t। तो ये अगर हम लोग लाएंगे ये सिंपली हो जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली देखो क्या हुआ, along x एक्सिस एक वेलोसिटी है vx, along y एक्सिस एक वेलोसिटी है vy, तो डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, दैट विल बी v एंड दैट इज √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो हम लोग जब ये करेंगे, व्हेन वी विल डू दिस, वी विल गेट सम वैल्यूज लाइक 10 प्लस 1/√2 होल स्क्वायर एंड वी विल गेट अ वैल्यूज लाइक 1/√2 होल स्क्वायर। सो फाइनली वी विल गेट 1v। So finally we will get 1v and you can easily calculate that. So finally हमको क्या करना पड़ेगा? We have got the v's from vx and this is our vy. This was vx and this is our vy. तो इधर से हमको v मिल गया। अब जो वर्क डन निकालना है, सबको पता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो u तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है 10, v already you can find out from this and by applying into this formula you can get the final work done what was asked in the question। So ये एक टाइप का प्रॉब्लम तुम देखो, इधर में हम लोग क्या क्या यूज किया। फर्स्ट फोर्स को रिजॉल्व किया जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कनेक्टेड है, उसके बाद एक्सीलरेशन निकाला जो न्यूटन सेकेंड लॉ से कनेक्टेड है, फोर्स बाय मास। उसके बाद मोशन का प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज फॉर वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद फिर से एक रिजल्टेंट पकड़ लिया, दैट इज दो साइड में दो कंपोनेंट है,
दो डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो रेक्टेंगुलर जो रिजल्टेंट मेजरमेंट सिस्टम है उससे हम लोग रेक्टेंगुलर प्रोसेस में रिजल्टेंट पकड़ लिया। तो फाइनली हम लोग ये यूज किया विच इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। सो एक सिंपल प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अदर चैप्टर्स। सो ऐसा ही क्वेश्चन सेट होगा, जस्ट टेक इट फॉर एन एग्जाम्पल। जो हम लोग जो क्वेश्चन सेट देखते आए हुए उसमें क्या होता है, तुम्हें कभी भी ये मिला कि एक चैप्टर में सिर्फ सर्कुलर मोशन से ही क्वेश्चन आया है, कि एक चैप्टर में सिर्फ ग्रेविटेशन से ही क्वेश्चन आया है, कि एक चैप्टर में सिर्फ वेक्टर से क्वेश्चन आया? ऐसा होता है लेकिन बहुत कम। बट बच्चों ये लोग हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे हम लोग टैकल करेंगे। द ट्रिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग को घबराना नहीं है। वी शुड नॉट बी परप्लेक्स्ड आवरसेल्फ, वी शुड नॉट बी पजल्ड। प्रॉब्लम जो है अगर दिया हुआ है उसका तो सॉल्यूशन होगा ही। फिजिक्स तो ऐसा ही सब्जेक्ट है ना कि सॉल्यूशन तो उसको निकलेगा ही। हाँ, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड यूटिलाइज करना पड़ेगा, वो तो हम लोग का है ही। हम लोग एडवांस देने वाले हैं, तो हम लोग तो बाकी लोगों से कुछ आगे ऑलरेडी जा चुका है तो वी आर ऑलरेडी चार्ज्ड अप। बहुत दिन बैठा रहा, अब एग्जाम में तो फाड़ देंगे, ये सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इधर से हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं, which is also under mechanics and a very very important type of question, जिसमें तुम्हें रोटेशनल मोशन भी काम आएगा और जिसके अंदर ग्रेविटेशन का भी हिस्सा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो चलो ये क्वेश्चन कैसे हम लोग टैकल करेंगे। We are considering a binary star system. We are considering a binary star system. Binary star system means there are two stars. They may be having same mass. Same mass का भी हो सकता है, different mass का भी हो सकता है। जैसे इधर मैंने लिया, एक का मास है 2m और दूसरा का मास है m। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका बीच का जो डिस्टेंस है d। So a binary star system is rotating about their center of mass and we have to find out the time period of the rotation. We have to find out the time period of the rotation. So देखो ये जो inertia of rotation है, ये जो inertia of rotation है, तो हम सबको पता है कि inertia of rotation में moment of inertia decides the factors of either it is inertia of motion or inertia of rest. A linear motion में mass is the deciding factor of inertia of rest or it is inertia of motion. तो ऐसा जब सिस्टम रहेगा that is between 2m and m, ऐसा जब सिस्टम रहेगा of different masses, so first we need to find out the center of mass of this type of system, that about which point it is actually having the rotation. तो बच्चों हम सबको पता है for this kind of rotation जिसका मास ज्यादा होता है, जो हेवियर होता है, तो उसका रोटेशन का स्पीड भी कम होता है। तो एंड with respect to the center of mass, when we are going to calculate the time period, we have to consider the lighter mass in our consideration. Why? Because this mass will have greater tendency of rotation about the center of mass. तो चलो पहले सेंटर ऑफ मास निकल लेते हैं। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? दो मासेस कनेक्टेड है बाय सम डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच ही होगा किसी जगह में। तो इन दोनों का बीच किस तरफ होगा? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो भारी है थोड़ा बहुत, जिसका मास हेवियर है, उसके तरफ शिफ्टेड होगा। तो चलो पकड़ लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर से x डिस्टेंस में है और इसका पोजीशन से d-x डिस्टेंस में है। तो हम लोग जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, जो हम लोग का मोमेंट का प्रिंसिपल है, दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ड्यू टू द पैरेलल फोर्सेस विल बी 0। ओ प्रिंसिपल से अगर हम चलेंगे तो हमको पता है कि 2m into x equal to m into d-x. This is the moment equation we know for any two masses at two end of the linear distribution. तो एक का मोमेंट दूसरे के साथ इक्वल होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो चलो mm तो चला गया, 2x इक्वल टू d-x, तो x कितना आया? तो x इधर से आएगा d/3। तो x अगर d/3 है तो
हेवियर मास से d/3 डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास है, तो स्मॉलर मास से ऑटोमेटिकली 2d/3 डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास तो होना ही पड़ेगा। तो अगर ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन के लिए क्या चाहिए तुम्हें, रोटेशन के लिए क्या जनरेट करेगा? ऑब्वियसली जब सन के चारों ओर हम लोग का अर्थ रोटेट करता है, हम लोग का पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर रोटेट करता है, तो obviously there is a force of gravity between sun and earth. So when there is a force of gravity between sun and earth, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो डेफिनेटली ये होता है, that is gmm by r square according to Newton's law of gravity. बट इधर तो m और स्मॉल m का बात तो छोड़ ही दो बच्चों, इधर g into 2m into capital M and divided by what is the distance between them? It is d square. It is d square, and this force should be equal with which one? This force has to be equal. ये फोर्स किससे इक्वल होगा? एक फोर्स से तो इक्वल होना ही पड़ेगा, that is the reaction of centripetal force, or you can say the centrifugal reaction. तो centrifugal reaction के साथ अगर ये इक्वल हो जाएगा, so you can write it like m omega square into 2d/3, because obviously हम लोग ये कंसीडर करेंगे what will be the time period of the motion for the lighter mass, because this has the greater tendency of rotation about the center of mass. So देखो इधर से m तो चला जाएगा, no issues, m कैंसल आउट हो गया, 2 कैंसल आउट हो गया, so finally ओमेगा स्क्वायर कितना आया? ओमेगा स्क्वायर इधर से जो आ रहा है that is gm by d cube. ओमेगा स्क्वायर जो आया इधर से that is actually 3gm by d cube. Very important, 3gm by d cube. तो इधर से ये अगर ओमेगा आया, so definitely it will be root over 3gm by d cube. तो टाइम पीरियड तो तुम्हारे पास आ गया 2 pi by omega, that is 2 pi by root over 3gm by d cube. So it will be 2 pi root over d cube by 3gm. So this is a kind of problem where you have to use the concept of center of mass and you have to apply the concept of gravitation. You have to apply the concept of gravitation. तो मैं ऐसा चल रहा हूं बच्चों की जस्ट 1 मंथ बचा है, 1 मंथ से भी 2 दिन कम बचा है एग्जाम के लिए। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं तो इजी से हार्डर प्रॉब्लम में जा रहा है, थोड़ा बहुत पहले इजी प्रॉब्लम फिर हार्डर प्रॉब्लम, थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, ये सब मिला के चल रहा है। तो नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें और भी थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा। तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हम लोग को दिखाना पड़ेगा, जो हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑन दिस मैकेनिक्स टॉपिक, तो वो भी एक कनेक्टेड प्रॉब्लम है, इसी तरह का एक कनेक्टेड प्रॉब्लम है जो हम लोग को सीखना पड़ेगा। ये कौन कौन चैप्टर का कनेक्शन था बच्चों? इसमें हम लोग का ग्रेविटेशन का कनेक्शन है और रोटेशनल डिनामिक्स का कनेक्शन है और सिंपल सा सेंटर ऑफ मास दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का भी कनेक्शन है। तो ये हम लोग को थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा। जैसे एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे which is so important to us. Why it is so important to us? Because it is also dealing with multiple chapters at a time. कैसे? You can write down, that is whenever a motion you will observe, either it is due to application of a force or it is spontaneous. तो जब भी फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन तो बनेगा ही। फोर्स जब अप्लाइड होगा, वॉट एवर इट इज एक्शन और रिएक्शन, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, फोर्स मीन्स देयर विल बी चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब उस जगह में एक इंपल्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे जिसपे हम लोग का ये पर्टिकुलरली 2-3 चैप्टर का कनेक्शन है, स्पेशली वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन एंड न्यूटन्स लॉज। कैसे? प्लीज राइट डाउन, दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, a particle of mass 3 kg is moving along its position vector
is describing the motion along its position vector 3t I cap minus 4 cos t j cap meter. 3t I cap and 4 minus 4 cos t j cap meter. Yes, we are dealing it in SI system. हम लोग SI system के अंदर काम कर रहे हैं. Now we have to find out the impulse by the force. We have to find out the impulse by the force for a time interval 0 less than equals to t less than equals to pi by 2. So we have to find out the impulse for a time interval 0 less than equals to t and less than equals to pi by 2. Now the important thing is that from here, that whenever we are going to discuss this impulse problem, we know very well that impulse I equals to, we all know, F into t, that is force into time, or even you can write it is change in momentum also. It is change in momentum. So here you can see the position vector, it is not uniform. This position vector is a function of time straight away. This position vector time dependent है, तो अगर टाइम बदलता रहेगा पोजीशन वेक्टर बदलता रहेगा, so as the displacement. अगर displacement is changing, so obviously it is a vector notation, and a vector is changing means it can be its magnitude or its direction, or both can be changing. So when displacement is non-uniform, velocity and acceleration will be there also non-uniform motion. So we have the velocity here as dr dt. So dr dt will be 3 I cap minus, it will be plus, because of differentiation it will be 4 sin t j cap. This becomes the velocity. So what about the acceleration, children? Acceleration क्या होगा बच्चों? तो we can write it as dv dt. So it will be 3 I cap is a general constant, so 3 I cap will be 0. If I differentiate this, is will be 4 cos t j cap. Sin is again converting into cos, it will be 4 cos t j cap. Now बच्चों फोर्स क्या होगा सबको पता है, that force equals to mass into acceleration. That force equals to mass into acceleration. तो mass कितना था? Mass was 3 kg. So force कितना आया? That is 12 j cap cos t न्यूटन. So ये आया फोर्स. अब देखो हम लोग का जो फोर्स का बारी आया, फोर्स में भी एक टाइम का फंक्शन है. फोर्स भी कॉस के ऊपर डिपेंडेंट है. फोर्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है. तो फोर्स अगर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वी हैव टू टेक दिस फोर्स एज ए वेरिएबल फोर्स, नॉट ए कांस्टेंट फोर्स. तो कांस्टेंट फोर्स का जो प्रॉपर्टी था इंपल्स का, ये डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो क्या करना होगा? सो एज दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, as this force is a variable force, so what we can actually do here, we have to take a very small interval of time, that is dt. If in the time interval dt our force is applying the impulse di as f dt, as di equals to f dt, so the total impulse in the given time interval will be 0 to pi by 2, within the interval 0 to pi by 2 f dt. So it's 0 to pi by 2 f dt. 12 j cap is taken out, and you can put that cos t dt overall in 0 to pi by 2. So if you integrate cos t, what will be the result? It will be sin t, you know, and sin pi by 2 is 1 and sin 0 is 0. So finally it will be 1 inside. This integration will lead you 1. So finally your answer will be 12 j cap. And what will be the unit बच्चों? यूनिट क्या होगा इंपल्स का? फोर्स इंटू टाइम है आखिर में, तो फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकेंड तो होगा ही, और ऑप्शन में तो यूनिट दिया ही रहेगा. तो लेकिन तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में न्यूटन सेकेंड को डाइन सेकेंड भी दिया जा सकता है, 12 को थोड़ा मॉडिफाई करके डाइन में दिया जा सकता है, केजीएफ में दिया जा सकता है. तो ये हम लोग को एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा टुवर्ड्स द आंसर ऑप्शंस.
अगर ऑप्शंस तुमने ठीक ठाक किया लेकिन यूनिट मैच नहीं किया, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। फॉर इम्पल्स सिर्फ न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का यूनिट नहीं होता है, इसका और भी एक यूनिट होता है जो मोमेंटम के साथ सेम होता है, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट में भी ऑप्शन दिया जा सकता है। सो व्हाट वी डिड चिल्ड्रन टुडे इन आवर दिस इंट्रोडक्शन क्लास फॉर एडवांस्ड, or you can take it for any competitive exam for the supreme level, that is we are going towards one problem after another, easy से hard के तरफ हम लोग जा रहे हैं, we are moving towards easy to hard। see, एक प्रॉब्लम हम लोग किया जिसमें हम लोग को कैलकुलस छोड़ के कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग देखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या किया, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम था, connecting all the mechanics chapter like vectors, motion, laws of motion and obviously work power energy। अब एक प्रॉब्लम हम लोग किया जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लिटिल बिट ऑफ सर्कुलर रोटेशनल मोशन और लिटिल बिट ऑफ ग्रेविटेशन भी था। और ये प्रॉब्लम में दिस प्रॉब्लम एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन वेक्टर टर्म्स एंड इट इज डीलिंग विथ अ वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का बच्चों बोर्ड लेवल में तुम लोग बहुत पढ़ चुके हो, कांस्टेंट लेवल फोर्स का जो चीज है बोर्ड लेवल में जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन टाइप आ चुका है, लेकिन वेरिएबल फोर्स का प्रॉब्लम तो एडवांस में आता ही है, हर साल आता है, एवरी ईयर इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डील विद द वेरिएबल फोर्सेस एंड इट इज नॉट द एंड, वी आर गोइंग टू डू द मैकेनिक्स अगेन इन द नेक्स्ट क्लास एंड दैट विल बी अ लॉन्गर क्लास and we will deal with in that particular session, we'll deal with the connected body motion, we will deal with equilibrium of the system, we will deal with friction and related problems on circular motion and frictions, and application of vector if possible in all other chapters of mechanics and other physics chapters। So you are going through the first introduction class from Minerva. Here I am Rahul. I will be meeting you soon in the next class for specially focus for JEE Advanced 2020। So बच्चों मिलते रहेंगे और एक स्क्रीन में एक मेल आईडी डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, तो उसमें जो भी डाउट्स है, अब 11th आवर है, 28-27 डेज बचा हुआ है, तो हम लोग को क्वेश्चन भेजते रहो एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास एंड वी विल बी मीटिंग वेरी सून for the next class। Namaste everyone, parents, students, we will be meeting very soon, hope you enjoyed, send me the doubts, we will be meeting so soon, adios, now I am signing out for today, keep yourself fit and fine for the exam, keep healthy, very good।